Minash-Shaytanir-Rajim. Bismillahir-Rahmanir-Rahim. Assalamu alaikum, my dear students. Hope you are all well. Today our topic is 1973 Constitution. Before starting a new topic, we will go to the background. As you know, all of you know that two constitutions had been made before 1973 Constitution. Both were abrogated. This is the background. First constitution was made in 1956. It was abrogated by Ayub Khan. Second constitution 1962, which was abrogated by Yahya Khan. After imposed a second martial law in the country, Yahya Khan announced 1970 election. As a result of this election, the result of what was the result? Separation of East Pakistan. After it, Yahya Khan given the power to the Zate Bhutto, who was a winning party chairman. Bhutto became the first civilian martial administrator, and after it, Bhutto left the martial law in 1972 and enforced the interim constitution. After it, Bhutto summoned the assembly's session on the result of the 1970 election. It was very crucial time, and very important issue was constitution. Bhutto made a 25-member committee of the National Assembly formed, and the constitution drafted by an elected body with the consensus of all the political parties. It was enforced. So it was enforced, the constitution of third constitution, in 14 August 1973. It was the third and permanent constitution of Pakistan. Before starting the 19th century constitution, there are some technical words. It is very important to know the meaning of these technical words. First of all, constitution. Constitution is a set of rules that guides how a country or state works. The constitution may tell what the branches of the government are, what power they have. It may also state the rights of citizens. Constitution is the sum of these laws and rules and regulations through which constitution administration of the state and business of the government is running, and rights of duties of the citizens are determined. आइन दस्तूर जो होता है वो कवायद और ज़वाबित का मजमूआ होता है. कोई भी मुल्क कॉन्स्टिट्यूशन के बगैर रह ही नहीं सकता. जब भी आप किसी इदारे में या किसी भी दफ्तर में जाएं या किसी भी कारखाने, फैक्ट्री, मिल, कोई भी इदारा हो, उसके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होते हैं. जब आप स्कूल में एडमिशन लेते हैं तो आपको रूल्स फॉर्म दिया जाता है. आपकी डायरी के ऊपर रूल्स लिखे गए हैं स्कूल के, जिसको फॉलो करना ज़रूरी होता है. अगर ये रूल्स और रेगुलेशन ना हो तो स्कूल तो चल ही ना सके. तो जब कोई स्कूल, कोई इदारा ना चल सकता बगैर रूल्स के, तो इतना बड़ा मुल्क कैसे चल सकता है. तो आइन और जो होता है वो सुप्रीम लॉ होता है ऑफ द स्टेट, सुप्रीम लॉ ऑफ द स्टेट होता है. तो no country can be exist and survive without the constitution. So constitution is very necessary for surviving of the country. Next technical words is the federal constitution, wafaki nizam. Division of powers between the central government, between the federal and the federating units. In our country, federating units are provinces. So, the division of power between the
central government and the federating units, वफाकी निज़ाम. Next is the parliamentary system. A parliamentary system of government means that executive branch of government has the direct or indirect support of the parliament. It's a responsible government. The government, the separation of head of the state and have the head of the government. पार्लियामेंट्री सिस्टम में हेड ऑफ द स्टेट जो होता है वो अलग होता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट अलग होता है. हेड ऑफ स्टेट जो होता है, अगर हम अपने मुल्क की बात करें तो हेड ऑफ द स्टेट हमारे मुल्क में सदर और हेड ऑफ द गवर्नमेंट प्राइम मिनिस्टर. पार्लियामेंट्री करेक्टर ऑफ द एग्जीक्यूटिव and the responsibility of the minister to the legislature. So these are the parliamentary system. Bicameral legislature. Bicameral means दो ईवानी. Legislature means मुकन्नना. So parliament consists of two houses or chambers, upper house and lower house. In our country, upper house is Senate and lower house is National Assembly. Judiciary, Adliya. The judiciary is the branch of government that interprets the law. It is a system of courts and settle the dispute and punish law breakers. Fundamental rights. Fundamental rights, बुनियादी हकूक. The fundamental rights as the basic rights of the citizens. For example, freedom of speech, freedom of thoughts, freedom of religion, freedom of life. So these are some technical words. Now come to the 1973 Constitution. You know, it's very important कि हमारा our Constitution divided in two parts. One is the main feature and other is the Islamic clauses. So these are the main features of 1970 Constitution. Our Constitution is federal Constitution. It's a written Constitution. It is parliamentary system. Direct election, bicameral legislature, constitution amendment, fundamental rights, independence of judiciary, direct election, national language. So these are the important points of 1973. And now we come and explain one by one. Written constitution. Our constitution of 1973 is written constitution. It is consists of 280 articles. Number 2, federal form of government. The Constitution of Pakistan of 1973 provide federal form of government consisting of 4 provinces of the central government of Pakistan. Parliamentary system. Our parliamentary form of government has been provided for the government in the Constitution. Head of the state is president and head of the government is prime minister. Prime Minister have more power than the President. Next is the direct election. Constitution of Pakistan 1970 has provided method of direct election to elect member of National Assembly and Provisional Assembly. यानी डायरेक्ट इलेक्शन होंगे जिसमें के लोग वोट का इस्तेमाल करेंगे और अपने नुमाइंदे मुंतखब करेंगे. और इसमें जो होगा डायरेक्ट इलेक्शन जो है सूबाई असम्बली में भी होगा और कौमी असम्बली के लिए भी होंगे. बाईकैमरल लेजिस्लेचर. नेक्स्ट इज द बाईकैमरल लेजिस्लेचर. द फेडरल लेजिस्लेचर इज बाईकैमरल कंसिस्टिंग ऑफ 2 हाउस, सेनेट एंड द नेशनल असम्बली. in the Constitution of 1973, bicameral legislature. Bicameral means 2 ऐवान पर मुश्तमिल होगी हमारी पार्लियामेंट, अपर हाउस एंड लोअर हाउस. अपर हाउस जो होगी वो सेनेट होगी, लोअर हाउस नेशनल असम्बली होगी. नेशनल असम्बली के मेंबरान जो होंगे वो डायरेक्ट वोट के ज़रिए आएंगे, लोग मुंतखब करेंगे. और जो होगा सेनेट के जो मेंबरान होंगे वो इनडायरेक्ट ज़रिए से आएंगे. सो दीज आर द डायरेक्ट इलेक्शंस. Independence of judiciary. Independence of judiciary. And independence of judiciary has been provided in 1973 Constitution. Judiciary safeguard the fundamental rights of the people. Fundamental rights. As like all other states, the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan also granted the fundamental rights for the citizens. So these are the important
main features of the 1973 Constitution. Now open your book and come to the page number 6. Now start reading 19th century Constitution. In April 1972, martial law was lifted and the provisional constitution order was in force. मार्शल लॉ हटा दिया गया और प्रोविजनल कॉन्स्टिट्यूशन ऑर्डर जो है पीसीओ जिसे कहते हैं सब इंटरिम कॉन्स्टिट्यूशन अबूरी आइन अ कमेटी ऑफ द नेशनल असेंबली वाज फॉर्म्ड which comprised 25 elected members from all the major political parties. The committee was tasked with drafting a permanent constitution for the country. इस 25 मेंबर कमेटी को टास्क क्या काम दिया गया ताकि मुल्क के लिए मुल्क का परमानेंट आइन बना सके. Now come to the page number 7. The salient features of the 1973 Constitution. Number 1. Following are the salient feature of 19th century Constitution. Federal Constitution. ये जो कॉन्स्टिट्यूशन है पाकिस्तान का फेडरल नोयत का होगा. The Constitution adheres to the principle of the federalism. कौन सा प्रिंसिपल में लाया गया? Federal system. It applies all the provinces of the country along with the federal capital Islamabad and the federal administrative tribal area FATA and the northern area now Gilgit-Baltistan. फेडरल गवर्नमेंट होगी जिस 4 सूबों पर इस्लामाबाद फाटा पर और नॉर्दर्न एरिया पर मुश्तमिल होगी. पाकिस्तान रिटन कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान का जो आइन है वो रिटन फॉर्म में होगा, लिखा हुआ तहरीर होगी. पार्लियामेंट्री सिस्टम. द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ अ पार्लियामेंट्री कैरेक्टर. द प्राइम मिनिस्टर who is the head of the government is a member of the parliament elected by and responsible to the parliament. Likewise, the cabinet that the prime minister constitute is made up of parliamentarian. जो पार्लियामेंट्री सिस्टम राइज होगा, पार्लिमानी निज़ाम होगा मुल्क में, हेड ऑफ द स्टेट कौन होगा? हेड ऑफ स्टेट से प्रेसिडेंट और हेड ऑफ द गवर्नमेंट जो होगी प्राइम मिनिस्टर होगा. और प्राइम मिनिस्टर जो है वो मेंबर होगा किसका? पार्लियामेंट का, और जवाबदेही भी पार्लियामेंट को होगा. इसी तरह जो प्राइम मिनिस्टर अपनी कैबिनेट बनाएगा. कैबिनेट का मतलब क्या होता है? इट्स अ स्मॉल ग्रुप ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पीपल इन द गवर्नमेंट हु एडवाइज टू द प्रेसिडेंट एंड प्राइम मिनिस्टर. ये भी जो मिनिस्टर्स होंगे वो भी पार्लियामेंटेरियन होंगे, पार्लियामेंट के मेंबर होंगे जो कि कैबिनेट का हिस्सा होंगे. नंबर 4. Bicameral Legislature. दो ऐवानी मुकन्ना. The legislature called the parliamentarian is bicameral. That is has 2 chambers or houses. Representation in the lower house called the National Assembly is on a population base, and while the representation in the upper house called the Senate is on the basis of the federating unit. All the federating unit or the provinces have equal representation in the Senate. Legislature पार्लियामेंट होगी 2 हाउसों पर मुश्तमिल, अपर हाउस एंड लोअर हाउस. जो रिप्रेजेंटेशन का होता है नुमाइंदगी, जो नेशनल असेंबली के मेंबरान होंगे वो इलेक्ट होंगे, डायरेक्ट इलेक्शन होंगे, वोट के ज़रिए मुंतखब होंगे. while the representation in the upper house called Senate जो कि Senate कहलाती है is on the basis of the federating units. All the federating units are the provinces, और जितने भी province होंगे वो Senate के मेंबर को मुंतखब करेंगे on the basis of equal representation. तमाम सूबों को इक्वल नुमाइंदगी दी जाएगी. Senate की जो है तमाम निश्चितें तमाम सूबों को बराबर तकसीम की जाती हैं. तकरीबन 14 सीटें जो हैं तमाम सूबों को दी जाती है. फिर जो है टेक्नोक्रेट्स आते हैं, और जिनमें टेक्नोक्रेट्स में उलमा भी आते हैं, स्कॉलर्स भी होते हैं, उनको भी सीट्स अलग होती हैं, मिनॉरिटी की सीट अलग होती हैं. टोटल 104 सीट्स होती हैं सेनेट की, और नेशनल असेंबली में 342 सीट्स होती हैं. नाउ कम टू द नेक्स्ट, फंडामेंटल राइट्स, बुनियादी हकूक़. द कॉन्स्टिट्यूशन रिकॉग्नाइज द फंडामेंटल राइट्स of the people. The legislature is denied any right to enact
legislation that contravenes these fundamental rights. तमाम फंडामेंटल राइट बुनियादी हकूक़ की ज़मानत देता है आइन, और कोई भी लेजिस्लेचर कानून साजी नहीं की जाएगी जो किसी भी हकूक़ की खिलाफ वर्जी करता हो, यानी उसके पामाल करता हो शहरियों के हकूक़ को। Constitutional Amendment, आइनी तरमीम। A constitutional amendment bill can be initiated in any of the houses of the parliament. In order to become law, it will need to be passed by at least 2/3 majority of the total membership in each house. The constitution is neither very rigid nor very flexible. कॉन्स्टिट्यूशन में आइनी तरमीम, आइन में अगर कुछ तरमीम करनी है, कुछ आगे इस चीज़ को तब्दीली लानी है, तो उसके लिए जब भी बिल पास किया जाएगा, जब भी कोई बिल पास होगा, तो 2/3 मेजॉरिटी दोनों हाउस में होनी चाहिए। यानी अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 3 लोग हैं, 3 में से 2 ओके किया करेंगे तो वो चीज़ ओके हो जाएगी। यानी अगर 342 नेशनल असम्बली की सीट है तो उसमें से 26 लोग जो हैं पार्लियामेंटेरियन जो हैं, अगर इस बिल को पास करना चाहते हैं, अगर वोट देंगे तो वो बिल पास हो जाएगा। तो पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना बहुत ज़्यादा रिजिड है, ना ही फ्लेक्सिबल, यानी बहुत ज़्यादा ना लचकदार है बहुत ज़्यादा, और ना ही सख्त है कि उसमें तब्दीली ना ला सके। इंडिपेंडेंट ऑफ जुडिशरी, अदलिया आज़ाद होगी। Constitution guarantees independence of the judiciary. It lays down strict procedure to be followed in the appointments of the and removal from the service of the judges of the superior court. जजों की तैनाती और उनको जो रिमूवल करना है उसका बहुत सख्त प्रोसीजर जो है वो मौजूद है। तो इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, अदलिया आज़ाद होगी, कोई प्रेशराइज नहीं कर सकता उनके फ़ैसलों में। अगर उन्हें कोई फ़ैसला, अदालतों ने कोई फ़ैसला प्राइम मिनिस्टर के ख़िलाफ़ भी दिया हुआ है तो उसी को मानना ज़रूरी होगा, कोई इसको प्रेशराइज नहीं कर सकता कि अपने फ़ैसले चेंज करे। नाउ कम टू द डायरेक्ट इलेक्शन। द नेशनल असम्बली एंड ऑल द प्रोविजनल असम्बलीज आर इलेक्टेड for the period of 5 years. Election to these assemblies are through direct votes. सूबाई असम्बलियों के लिए कौमी असम्बली के इलेक्शन जो होंगे वो डायरेक्ट होंगे ऑन द बेस ऑफ अडल्ट फ्रेंचाइज, बालिग रायदही पर होंगे। यानी अगर जिसकी एज 18 साल है वो वोट का इस्तेमाल कर सकेगा, और सूबाई असम्बली और अपने कौमी असम्बली के मेंबरान को मुंतखब कर सकेगा। नंबर 9 पॉइंट इज़ द नेशनल लैंग्वेज। उर्दू इज़ रिकग्नाइज एज अ नेशनल लैंग्वेज ऑफ द पाकिस्तान, और पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान जो है वो उर्दू को करार दिया गया, और फॉर द प्रमोशन ऑफ द रीजनल लैंग्वेज जो होगी उसको भी प्रमोट किया जाएगा विद द पैसेज ऑफ टाइम। और ऑफिशियल जो लैंग्वेज, एक चीज़ दिमाग में रखें, ऑफिशियल लैंग्वेज हमारी अभी भी इंग्लिश है और नेशनल लैंग्वेज जो है उर्दू है। सो दीज आर द इम्पोर्टेंट फीचर्स ऑफ द 1973 कॉन्स्टिट्यूशन।